एवं श्रीमती खोलकर का शुभागमन हो चुका है। हम उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। देवियों और सज्जनों, यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एमडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव सिंघल एवं श्रीमती जयश्री सिंघल का शुभागमन हो चुका है। हम उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। Ladies and gentlemen, we are joined by our independent director, Shri Datta Prasad Kolkar and Mrs. Kolkar. Ladies and gentlemen, we are joined by Shri Sanjeev Singhal, Chairman and Managing Director of MAZAGON Shipbuilders Limited, and Srimati Jayashri Singhal. समझता बंद कर दो। हाँ हाँ वो बंद करवा रहे नहीं, मैं समझता ना, बंद करता हूँ, बोलना पड़ता है उसको। हाँ उसे बोल देता ना उसको। अरे बोलो उसको जाके, उसको बोलो कि जब मैं वो इसको बोलो, ये आदमी करता है, वो नहीं करता है। अभी कब बैठे क्या करेगा नहीं, वो बता उसको तो खाले खाले तो बोलो हेलो हेलो। हाँ ओम श्री कलशदेव वरुणदेवतान धूपदीपम समरम नमस्कुर्मि वरुणदेवता कलशदेवताय नमः सांघ्रा संपादयं यथा संपादितं फलम अर्पयामि नमस्कुर्मि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम भूर्वास यथा संपादयं नैवेद्ये पानीय समर्पयामि। ओम भूर्वास स्वाहा पुनर्नैवेद्ये पानी अर्पयामि नमस्कुर्मि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मण स्वाहा। ओम अस्तु देवताय नमः कलश देवताभ्यो नता संपाद नैवेद्यार्थे इदं फलं नैवेद्यम अर्पण सुनि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तपक्षलं समर्पयामि मुखपक्षलं आचमन समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां अर्पयामि नमस्कुर्मि। ओम श्री वरुण देवताय नमः प्रियतां नमः। ओम भूर्भुवः ओम गंगणपते नमः। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णवतां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाव ताम् आव जातेदो लक्ष्मीं पगामिनीं यस्यां वीर्यं विन्देयं गामेश्वं पुरुषाणम् अशप्रदमध्यान् हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं निपहे श्रीमादिविशुदां कांसो स्मिता हिरण्यप्राकाराम् आदरां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे सीतां पद्मभरणां तां यो वैश्यं चन्द्रां प्रभाससा ज्वलन्तीं श्रियं लोकदेशुतरां तां पद्मिनीं शरणम् अहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीशतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसुभ्यादो वनस्पतिवृक्षोऽधिबिल्वा तस्य फलानि प्रसादन्तु मायान्तरस्य पय अलक्ष्मीः उपेतुमादेव सखा कीर्तिश्मणिनासो प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रे स्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददाति मे क्षुब्धिपासां मलाञ्ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूते समृद्धिं च सर्वानुमेघ्रात् गन्धद्वारां धुराधर्षां नित्यपुष्टां कृष्णे ईश्वरीं सर्वभूताना तायोपैष्यं मनस्स कामाकूतिवाच सत्यमशिमयि पशुना रूपं कर्दमेन प्रदाभूता मयि सम्भकर्दं श्रियं वासय मेकुले मातरं पदमालिनीम् आपसन्तु सिग्नानि चिकले तव समेकुले नीच देवी मातरं श्रियं वासय मेकुले आद्रां यक्कर्णीं यष्टिं सुवर्णहिमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावो आद्रां पुष्कर्णीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावो ताम् आव जातवेदो लक्ष्मीं पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोपनश्विनं पुरुषानं शुचि प्रेतो भूत्वा जुह्यात् दाज्यमनुं सुक्तं पंचदशञ्च श्रीकाम सतनन्दवेद पद्माने पद्मवृ पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यलभामयम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मिलपतां देवी सर्वकामांश देमे पुत्रान् सकामांश देमे। ओम श्री महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शिवजस्व
मायुष्य धान्यम धनम पशुम बहुपुत्रलाभम हत संवत्सरम दीर्घमायु शांतिम पुष्टिम तुष्टिम चास्तु सोम श्री महालक्ष्मी जगदम्बा देवता प्रीत्यर्थ माविषिकम समर्पयामि अर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम श्री महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि। ओम महाकाली महालक्ष्मी जगदम्बा देवता नमः चंदनम समर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम हैद्रा कुंकुम सौभाग्य द्रव्याणिम अर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम हैद्रा कुंकुम समर्पयामि अक्षदां समर्पयामि नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि विविध पुष्पाणि फुलानि समर्पयामि सुगंधि पुष्पमाला अर्पयामि नमस्ते। जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती धूपम अग्रपयामि धूपम समर्पयामि दीपम दर्शन दीपम समर्पयामि नमस्ते। धूप दीपम समर्पयामि सिद्धिविनायक जगदम्बा देवता जगदम्बा सिद्धि जगदम्बा देवता प्रीत्यर्थ नैवेद्यार्थे यथा संपादित सिद्धिविनायक मंगल मूर्ति महागणपति देवताय नमः यथा जगदम्बा देवताभ्यो नमः यथा संपा नैवेद्यार्थे दुग्धवट्टिका नैवेद्यानीम अर्पयामि नमस्कुरुमि दुग्धवट्टिका नैवेद्यानीम अर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम भूर्वा स्वाहा नैवेद्यमध्ये पानीय समर्पयामि। ओम भूर्वा स्वाहा पुनर्नैवेद्यमध्ये पानी अर्पयामि नमस्कुरुमि। सिद्धिविनायक मंगलमूर्ति महागणपति जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी जगदम्बा देवता प्रत्यद दुग्धवट्टिका नैवेद्यानीम अर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा। उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तपक्षलं समर्पयामि मुखपक्षलं समर्पयामि आचमन नैवेद्यं समर्पयामि द्रवदक्षिणाम् अर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम जगदम्बा देवता प्रीत्यर्थ नारिकेला फलानि अर्पयामि नारिकेला फलानि अर्पयामि नमस्कुरुमि। जगदम्बा देवता प्रीत्यर्थ डालिम फलानि अर्पयामि नमस्कुरुमि। काश्मीर फलानि अर्पयामि नमस्कुरुमि काश्मीर बहुबीज फलानि अर्पयामि नमस्कुरुमि। प्रार्थनापूर्वक दंडवत नमस्कुरुमि। मनोजो मातुल्यं वेगं चैतन्यं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजमानरं यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वायुपुत्राय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात्। बजरंगबली हनुमन्ताय नमः। आह्वयामि ध्यायामि स्थापयामि पूजामि। ओम समस्त बजरंगबली हनुमंत देवतानां पयस्थानं समर्पयामि आचमनस्थानं समर्पयामि स्थानं समर्पयामि शुद्धासनं समर्पयामि। गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्पन्दं सनिन्दं कुरु। ओम सिद्धि ओम वायुपुत्र देवताभ्यो नमः। अगस्थानं समर्पयामि अगस्थानान्तरेण आचमनस्थानं समर्पयामि स्थानं समर्पयामि पंचामस्थानं समर्पयामि शुद्धोदस्थानं समर्पयामि शुद्धासनं समर्पयामि नमस्कुरुमि। हनुमन्त देवताभ्यो नमः। अक्षताम् अर्पयामि अक्षतां समर्पयामि नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि हनुमन्त देवताभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि हनुमन्त देवताभ्यो नमः। सुगंध पुष्पमालान् अर्पयामि नमस्कुरुमि हनुमन्त देवताभ्यो नमः। स्थापितं धूपम् अग्रपयामि धूपं समर्पयामि हनुमन्त देवताभ्यो नमः। दीपं दर्शय दीपं समर्पयामि दीपं दर्शय दीपं समर्पयामि नमस्ते। हनुमन्त देवता धूप दीपं समर्पयामि यथा संपादित नैवेद्यार्थे इदं फलं नैवेद्य अर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम भूर्वा स्वाहा नैवेद्यमध्ये पाणी अर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम भूर्वा पुनर्नैवेद्यमध्ये पाणी अर्पयामि पुनर्नैवेद्य पाणी समर्पयामि नमस्कुरुमि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। देवियों और सज्जनों, यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र के सम्माननीय कामगार मंत्री श्री सुरेश खाड़े हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम इस कार्यक्रम में उनका हृदय से स्वागत करते हैं।
Ladies and gentlemen, with great honor, we announce the arrival of Dr. Suresh Khade, Labour Minister of Maharashtra. बंद करो क्या बोलता है उसको समझता नहीं क्या उसको नहीं वो गिफ्ट है ना वो इधर बैठा है उसको बोलो इधर बैठा उस पे बैठा है इधर बोलो जो वो बंद कर अटेंड पे बंद कर देता है बस बोलो हाँ ओम श्री वज्रंगबली हनुमंता दीपम समनैवेद्यम समरम नमस्कुर्मि ओम श्री गणेशाय नमो नमः ओम नमस्ते ओम हरि ओम नमस्कार महादेवी महारुद्र पराक्रमी महाशक्ति महोत्साही महाभय विनाशिनी वरे ब्रह्मा संसाले वैष्णवी देवता दाही दिसे असी रक्षो चामुंडा शवाना उद्योतिनी शीर्ष रक्षो संश भालदेहवा सुगंधा नासिका रक्षी मुख रक्षो शिव प्रियात नेत्रा लोचना रक्षो श्रवणाद वारवासिनी कोमारी दात सरंशो जिवार्क्ष सरस्वती नीलग्रीवा कंठ सरंशो दोन्ही स्कंदांच खड्गिनी दंडिनी दोन्ही हातांच भूषणा वृजहरणी हृदयालयिता देवुद्रे शूलहरणी गुहेश्वरी गुहे रक्षो रक्षो नाभीसी कामिनी कटी भगवती सरंशे गुडगे विंध्यमांसनी जांगा महालक्ष्मण पुत्रकन्या महालक्ष्मी रक्षी भाररेश भैरवी राजद्वारे महालक्ष्मी तमने रक्षाधिथले रक्षदेवी जयंती पावनाशिनी दिव्यंडिका कवच संदाय पठे नर निर्होतसे लोकी संग्रामी पावतो जय दैवी संपत्ती त्या लाभ होतसे धन्य तो जगी अपमृत्यू टळे त्याचा होत शतायुषी नष्ट होती रोग व्याधी विष त्यासन वाजते जारण मारण मंत्रादी याचे काही न चालते ग्रह भूत पिशाचादी वेता ब्रह्म राक्षस मुखानी म्हणता स्तोत्र पळती हे दृढ निश्चित सन्मान त्या लाभे कीर्ती विश्वात लाभते आरोग्य लाभूनी त्यास तेजे उत्तम वाढते अधिक वच वाचन चंडी पाठतो पाठाची लाभते सिद्धी होत फल लाभ जो बंद असे पृथ्वी जल होत कारण परंपरा टिके त्याचा होत वंश पावन दुर्लभ देवांनाही जे शेवटी स्थान ते मी प्राप्त होते मनुष्याला भगवतीच्या कृपेमुळे देवी कवच संक्षिप्त बनले असे श्रीधरने माठ पठिण्या अनुवादिले असे ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ओम सोम सोमाय नमः ओम सोम सोमाय नमः ओम सोम सोमाय नमः ओम बुम बुधा ओम बुम भोमाय नमः ओम बुम भोमाय नमः ओम बुम भोमाय नमः ओम बुम बुधाय नमः ओम बुम बुधाय नमः ओम बुम बुधाय नमः ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ओम शुभ शुक्राय नमः ओम शुभ शुक्राय नमः ओम शुभ शुक्राय नमः ओम शम शनेश्वराय नमः ओम शम शनेश्वराय नमः ओम शम शनेश्वराय नमः ओम राम राहवे नमः ओम राम राहवे नमः ओम राम राहवे नमः ओम किं केत्वे नमः ओम किं केत्वे नमः ओम किं केत्वे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताय नमः शांतिं पुष्टिं तुष्टिं चास्तु आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः शांतिं पुष्टिं तुष्टिं चास्तु आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः शांतिं पुष्टिं तुष्टिं चास्तु आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो प्रार्थना दंडवत नमस्करोमि
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं 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 महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं महालक्ष्मी एकाक्षी नारिकेलाय नमो नमः श्री गणेशाय नमः इंद्रवाज नमस्तुते महामाये श्रीप्रेषदे शंखचक्रदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गुरुणारूढे कोला सर्वभयंकरी सर्व पापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धे बुद्धिपदे देवी मुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्धा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंतरते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी शंभुदे महालक्ष्मी नमोस्तुते। देवियों और सज्जनों, महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमती यामिनी यशवंत जाधव का इस प्रांगण में पदार्पण हो चुका है। इस कार्यक्रम में हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। Ladies and gentlemen, we are now joined by Honorable Member of the Legislative Assembly, Srimati Yamini Jadhav. स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापावरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परम जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधर देवी नालालंकार भूषिते जगत्स्थित जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते महाराष्ट्र पठेत भक्ति मानराम सर्व सिद्धि अपन राज्य परम एकाल पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकाल पठे नित्यं धन दान समजम त्रिकाल पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम। देवियों और सज्जनों, आज के समारोह के मुख्य अतिथि का जब इस परिसर में आगमन होगा तो पहले उनका स्वागत और उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यह सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम इस मंच से कुछ ही दूरी पर संपन्न होगा। उसके साथ मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट हमारे अतिथिगण एक साथ इस मंच पर पधारेंगे। फिर आगे का कार्यक्रम इस मंच से प्रारंभ होगा। हाँ अस्य जिगुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्ठ छंदः श्रीत्वात्म देवता ओम ऐं विजयम ओम ह्रीं शक्तिं ओम क्लीं किलकं मम सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थ जपे विनियोगा। शुवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जाप शिवो भवेद न कवचन मर्गा स्तोत्रं किलकं न रहस्यं न सूक्त नाभिधानं न वासवचनं कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेद अतिघ्योतां देवानामि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नस्य निरुपारतिं मारणं मोसंब नोच्चाटादिगं पाठ मात्र कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् अथ मंत्रा ओम श्रों श्रों श्रं शं पटमयं ह्रीं क्लीं ज्वल उज्ज्वल प्रज्वल ह्रीं ह्रीं क्लीं श्रावय श्रावय शापं नाशय नाशय श्रीं 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 जुस श्रावय आदय स्वाहा ओम श्लीं हुं क्लां जुस जल उज्ज्वल मंत्र प्रज्वल हम सम लं शं फट स्वाहा नमस्ते रूपाय नमस्ते मधुमोदिनी नमस्ते कैटविनाशिन्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शंहंत्रंज सिंहासुसनी नमस्ते जगते देव सपसुंदरी एंकानि रूपाय विंकारी प्रतिपालिका क्लीं कालिका रूपेणे बीज रूपे नमस्ते चामन चंद्रपाद एक कार्य वरदानी विचेतवनित नमस्ते मंत्रपणी धान द्विप्रति वाम विवाशति क्रां क्रीं देवी श्याम शुमे शोम गुरुम हुंका रूपेणे राम जरुहालानी भ्राम भ्रूम भैरी भद्रे भवानी ते नमो नमः वंकंचंटम सा विदुरं विदुरं विवदय विवदय ह्रीं शाम जीवय जीवय टोटे टोटे जम्बय जम्बय दीपय दीपय मोचे मोचे हुम फट जराम औषध ऐं क्रीं रंजय रंजय संजय संजय गुंजय गुंजय बंदे बंदे भ्राम भ्रुभैरवी संकुचम संकुचम त्रोटे त्रोटे बीम स्वा पाम बीम पुमर्धान खां किं खुशदा ब्लाम ब्लीम ब्लिस्त गुंजय सूत्रैरवे अभक्ताय दातवम गोपीदन रक्ष पार्वती वीणा कुंज
कुंजिका देव्या यस्तुपती बोलत न तसं राहते सिद्धीर अरण्यवृत्तितं यदा श्री रामतंत्रे ईश्वर स्वदै कुंजिका स्तोत्रम संपूर्ण सु श्री जगदंबा प्रणमस्तु. ओम नमो देवी महादेवी शिवाई सततं नमः. नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणततां रुद्राय नमो नित्याय नमो धार्ये नमो गौर्ये नमो ज्योत्सचंद्रमा सुखाय सततं नमः. कल्याणं प्रणतं वृद्धे सिद्धे कृपे नमो नमः. नैऋत्ये भूपदक्षिणे शर्वाण्ये तन् नमो नमः. दुर्गा पाराय साराय सर्वकारिण्ये खातिकृतुम्राय सततं नमः. अति सौम्याय रुद्राय नता तस्यै नमो नमः. नमो जगत्प्रसादेवी कृते नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाया शब्दः नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यदेवते नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरपण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु द्विधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु छारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु तुषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु श्रुतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. इंद्रनाम अधिष्ठादि भूतनाथ व्याप्ति देवी नमो नमः. जगदंबा प्रणमस्तु जगदंबा प्रणमस्तु. ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदने विश्वविनोदिनी नंदिनुदे गिरिवरविंद शिरोदिनी वासिने विष्णु विलासिने जिष्णुनुदे भगवती हे शीते कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कुदे. जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुदे. जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुदे. ऐ जगदंब कदंब शिखर शिरोमणी तुंग हिमालय शृंग निरालय मध्य गदे मुदु मुदुरे मैद कैटिकाचे महिषासुरदे. जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुदे रम्यकपर्दिनी शैलसुदे.
अंबे एक गरीब भरी भक्ता साती धरी विघ्ने दूर कर दारिद्र माझे हरी चित्ती मूर्ती वरा विक्री ध्यातो तुला अंतरी वाचा शुद्ध करी विलंबन करी पावे तरी सुंदरी जगदम्बा माता की जय। माते एक बिरे वराभे करे दे तू दया सागरे माझा हेतू परे मनातवरे संदेह माझा हरे जेणे पाप सरे कुबुद्धी विसरे ब्रह्म केदी संचरे देई पूर्ण करे भावदरी तरे करे असं करावे तरे अनाथ संबे विसरू नको बसागरी सांग सगळ्याचा तरुण अन्याय मी माझे मी तुझे लेकरू नको रेणुके मी मारे गुण रेणुके माझे दैन्य करू जगदम्बा माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती श्रीमद वासुदेव सरस्वती श्री स्वामी समर्थ दत्त भगवान दत्तात्रेय महाराजाय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वात्मकं ततं सदिलक्ष्यम् एकं नित्यमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भवातीदं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जगदम्बा प्रणमस्तु। मोबाइल दो मोबाइल हम वाइस प्रेसिडेंट साथ हैं। यस यस काल भैरवाय नमः। देवराज सैवमान पावनाधि पंकजम शेखर
आज के समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ एवं विशेष अतिथि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़, महाराष्ट्र के सम्माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सम्माननीय कामगार मंत्री श्री सुरेश खाड़े, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमान इन चीफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमती यामिनी यशवंत जाधव, नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण वाइस एडमिरल किरण देशमुख, एमडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव सिंघल, भारतीय नौसेना के फ्लैग ऑफिसर्स, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, एमडीएल के सभी निदेशकगण एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, उद्योग जगत से पधारे अतिथिगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, एमडीएल परिवार के सदस्यगण एवं देवियों और सज्जनों, आज के इस दिव्य और भव्य समारोह में माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। आप सभी विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हैं, आनंदित हैं, हर्षित हैं और आह्लादित हैं। आज परियोजना P-17 अल्फा के अंतर्गत एमडीएल में निर्मित होने वाले चौथे युद्धपोत का जलावतरण होने वाला है। एमडीएल अपनी स्थापना के 250वें वर्ष में है और इस प्रांगण से एक अत्याधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, विश्व स्तरीय युद्धपोत का जलावतरण आज के इस आयोजन को अविस्मरणीय बनाता है। एमडीएल की स्थापना के हुए साल 250 साधारण से अत्याधुनिक बने स्वर्णिम है अपना इतिहास। हम हैं देश के पोत निर्माता, नौसेना का हम पर विश्वास, युद्धपोत या पनडुब्बी हो दुनिया भर में हम हैं खास। अब मैं अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव सिंघल महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना संबोधन करें। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जयदीप धनखड़ जी, चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन, श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री रमेश बैस जी, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, FOC in Sea, Western Naval Command, Vice Admiral Dinesh Tripathi, CWPA, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Honorable Labour Minister, Dr. Suresh Khade, flag officers and other senior officers from the Indian Armed Forces, dignitaries from the Ministry of Defence, Honorable Member of Legislative Assembly Mrs. Yamini Yashwant Jadhav, dignitaries from Centre and State Administration, CBO and directors on the board of MDL, friends from the media, other distinguished guests, माझ्या प्रिय कामगार आणि अधिकारी बंधू भगिनीनो, ladies and gentlemen,
आज जिस युद्धपोत का जलावतरण हो रहा है वह अत्याधुनिक तकनीक और हर परिस्थिति में सामर्थ्य एवं शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। आज के इस गौरवशाली अवसर पर मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता है। With an illustrious heritage of 250 years, Mazagaon Dock Shipbuilders Limited, which started its journey as a small dry dock in 1774, has evolved into a globally acclaimed shipyard with expertise to build most complex, state-of-the-art warships and submarines. I take pride in sharing that between 2014 and 2022, MDL has delivered 5 destroyer-class ships to the Indian Navy. That is delivering 1 destroyer almost every 20 months. With delivery of 1 more destroyer slated soon, we shall be further improving upon these timelines. In addition, between 2017 to 2022, MDL also delivered 5-number Kalvari-class submarines to the Indian Navy. MDL achieved this and more despite massive challenges faced due to COVID, semiconductor chip shortages, critical equipment challenges, on account of ongoing Russia-Ukrainian war and its cascading effect on the supporting industry. Our consistent delivery rate places MDL amongst the frontline shipyards across the globe, though these global shipyards are flanked by a far more robust ecosystem supporting them. Inviting your attention to the beauty that stands tall before us, this imposing, massive and formidable ship is the final ship in the series of 4 frigates being built at MDL for Indian Navy under P-17 Alpha class or Nilgiri class ships. This project is a highly complex platform in which float, move, and fight capabilities are achieved by integrating a web of complex systems while maintaining the stealth features. When commissioned, the platform shall enhance the combat capability of the Indian naval fleet. The P-17 Alpha class frigates are being built using indigenously developed special steel. The construction of these vessels is a major boost for Aatmanirbhar Bharat and Make in India, with orders for equipment and systems on indigenous firms, including more than 200 MSMEs, leading to an indigenous content of about 75%. Construction of this ship also introduces the integrated construction methodology, thus ushering into a new era of warship building with compressed delivery timelines. I sincerely acknowledge and applaud the support of Warship Overseeing Team, Warship Design Bureau, and the entire Indian Navy, which is far more than what can be described in words. This ship represents our unique trust and confidence in each other. She reflects our partnership that has stood the test of time. She is a symbol of our shared commitment to peace and security. MDLच्या कामगारांनी विशेष करून कठीण काळात जे अथक परिश्रम घेतले त्या करते ते देखील कौतुकास पात्र आहेत. I would now like to call out to Team MDL. You know that there is much to do and much is expected of you. I am confident that you have the ability and determination to deliver this ship, mission ready on time. That is our challenge, our aim, and our opportunity. Ladies and gentlemen, I would like to reiterate that Team MDL is deeply committed to deliver quality ships on time, and the dedicated efforts and professional approach of all the stakeholders would bring to life the exquisitely designed ship into reality to provide human services to the nation in the years to come. Thank you, Dhanyavad, Abhar. May fair winds and following seas guide this warship on its mission. Shanno Varna. Jai Hind. हजारों हाथों की मेहनत जब मिलकर रंग दिखाती है, युद्धपोत या पनडुब्बी हो लहरों पर लहराती है। सागर की सीमा सदा सुरक्षित, यह संकल्प हमारा है। हमें नाज है एमडीएल पर, यह परिवार हमारा है। अब मैं नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार से निवेदन करते हैं कि कृपया अपना संबोधन करें। Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar ji, Srimati Dr. Sudesh Dhankhar ji,
Shri Ramesh Bayasji, the Honorable Governor of Maharashtra, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shindeji, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavisji, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Shri Suresh Khareji, Honorable Labour Minister, Mrs. Yamini Yadavji, Honorable Member of Legislative Assembly, Vice Admiral Kiran Deshmukh, the CWPA, Shri Sanjeev Singhal, Chairman and Managing Director of MDL, friends from the media, flag officers, officers, MDL staff, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. Namaste. It is our honor to have amongst us the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar on this historic occasion of the launch of the 4th MDL-built Project 17 Alpha ship. What makes this event even more memorable for the Indian Navy is the fact that this is the second launch of a P-17 Alpha ship in a short span of 2 weeks. We just had Vindhyagiri being launched on the 17th of August at Garden Ridge Shipbuilders, Kolkata, and today we are having Mahendragiri being launched today. So when one looks at the names of all the 7 P-17 Alpha ships, together they portray the unmatched geography of a nation, the unparalleled warship building prowess of our shipyards, the unwavering commitment to Aatmanirbhar and unambiguous expression of our confidence as a growing nation and a growing navy. Talking of Mahendragiri and the Project 17 Alpha ships, these ships draw their name from the erstwhile Nilgiri class, which marked the beginning of our determined journey towards becoming a builder's navy from a buyer's navy. This was a very strategic decision to design in-house and build our ships indigenously. So when nobody believed, we dared. And the results, ladies and gentlemen, are there to be seen. We are now in the select group of nations that can build aircraft carriers. There are hardly 7 or 8 countries in the world who can build aircraft carriers. So our Warship Design Bureau has designed over 90 ships of 20 different classes. And Mahendragiri is yet another state-of-the-art multi-role frigate made in India, made by India, and made for India. So the launch of Mahendragiri comes at an important time wherein the need for an assured umbrella of security is a must for sustaining the aspirational trajectory of a nation. As we move towards the third largest economy, which implies a large amount of trade and transit of merchant ships through the seas in the Indian Ocean region. So at sea, the traditional challenges in the Indian Ocean region and the larger Indo-Pacific continues to persist. And if you add to it the scourge of non-traditional challenges such as piracy, drug smuggling, natural disasters, etc., we are underpinned by the Honorable Prime Minister's vision of Sagar, which is security and growth for all in the region. And this policy of Sagar has just completed 100 months in existence. And the Navy has a mandate to not only pursue, protect and preserve and promote India's national maritime interests, but also to be proactive in tackling security threats that affect all the countries in the region. So driven by these imperatives, the Indian Navy remains mission deployed across vast swaths of the ocean
to secure or legitimate national interests wherever they may lie. The deployed assets retain the potential and flexibility to easily transform from the military posture to undertake many other roles, be it benign, be it diplomatic or constabulary. For instance, a naval frigate on an anti-piracy mission in the Gulf of Aden can almost immediately be redeployed to undertake disaster relief tasks or search and rescue missions, emergency evacuations, or provide assistance to friendly countries or participate in an exercise. In fact, undertake practically any mission that the Navy is tasked with. Mahendragiri will do all that, and therefore it will prove to be a valuable addition to our fleet. Her versatility, coupled with attributes like access, mobility, reach, and resilience, will make Mahendragiri a unique instrument of India's maritime power. Maritime power inevitably draws its strength from indigenous shipbuilding capability and capacity. And in this regard, Mazagon Dock Shipbuilders Limited has been a close and valued partner of the Indian Navy. So I would like to congratulate the CMD, his staff, and particularly all workers of MDL for reaching yet another milestone in their glorious journey so far. My compliments also to the Director General, Warship Design Bureau, and the Warship Production Superintendent. Your teams have done exceedingly well in accomplishing this feat, and I am sure that you will continue to deliver reliable, high quality and combat-worthy warships in a timely manner. To conclude, I assure the nation that Mahendragiri, once commissioned, would proudly fly the Indian flag across the oceans as a symbol of our nation's maritime might. Jai Hind, Shano Varan. कहते गांवों का देश है भारत और एक गांव माझगांव है। मुंबई नगरी में यह स्थित जिसका सागर धोता पांव है। पनडुब्बी बनती यहाँ पर होता जहाज़ों का निर्माण। भारत का गौरव है यह है नौसेना की शान। समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखर महोदय से निवेदन है कि आज के इस अनुपम अवसर पर अपने ओजस्वी आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Bais, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, CMD MDL, Shri Sanjeev Singhal, Honorable Labour Minister, Government of Maharashtra, Shri Suresh Khade, Honorable Member of the Assembly, Srimati Yamine Jadhav, Vice Admiral Shri D.K. Tripathi, Vice Admiral Kiran Deshmukh, distinguished members of the Defense Ministry, State Government and Central Government, and everyone associated with MDS, an illustrious organization presently in its 250th year. Friends, the launch of Mahendragiri
is a significant milestone in our maritime history. It is the last of the 7 warships of the Nilgiri class stealth frigates built under Project 17 Alpha. Last month, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji launched Vindhyagiri, the 6th frigate built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited in Kolkata, the city of joy. A pleasant coincidence, a year ago, we had attained a new milestone. On 2nd September 2022, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had commissioned the country's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant at Cochin Shipyard Limited. It was just a year ago. Reflecting the aspirations of New Bharat, Vikrant stands as a symbol of indigenous potential, indigenous skills, and our ambitions to ride over high tides. Let me share, friends, another accomplishment today that makes us all proud. It reflects our technological prowess and deep penetration. UPI recorded over 10 billion transactions worth over rupees 15 trillion as of August 30, according to data issued by National Payments Corporation of India. Friends, this would make all of us very proud. Indeed, a phenomenal feat that epitomizes the big change taking place all over. The launch of warship MAHENDRAGIRI will mean, and this is some kind of a record, this indicates the pace of progress we are having in the country. This will mean 5 launches of the same class warships in about 15 months, a feat that makes us proud. The warship MAHENDRAGIRI, named after a mountain peak in Eastern Ghats located in Odisha, is an engineering marvel with the state-of-art features and cutting-edge technologies. This majestic warship is a remarkable symbol of our nation's strength and maritime prowess, a testament to the unwavering commitment and indomitable spirit of Indian Navy that has ever made us proud in all kinds of situations. The speed of manufacturing warships has improved ever since the new method of integrated construction has been adopted. And this, friends, has yielded geometrical results for nation's welfare. The Nilgiri class warships have been designed in-house. This by itself is an accomplishment. By Indian Navy's Warship Design Bureau, the pioneer organization for all warship design activities. Friends, it was not without meaning that Naval Chief said, made in India, made for India, made by India. And that is something which we could not have dreamt or contemplated few decades ago. This is a great moment of joy for all of us. Aligning with country's resolute commitment to Aatmanirbharta, a substantial 75% of the orders for equipment and systems of Nilgiri class have been made to indigenous firms. This is important. Indigenous component. But what is more important, what is more significant, what is more of greatest impactful situation is that job has been given to small, micro and medium enterprises. Their contribution in this state-of-art MAHENDRAGIRI is commendable. It speaks of our inclusive growth and involvement of our small enterprises. The launch of MAHENDRAGIRI is an apt testament to the incredible progress our nation has made in building a self-reliant naval force. Friends, amid
evolving power dynamics in the Indian Ocean region, this launch gains great strategic importance. India's recent phenomenal economic rise and global ascendancy imperatively call for a modern navy to protect its maritime interests and shoulder additional responsibilities, particularly in the current geopolitical and security situation that prevails in the Indian Ocean region. It is soothing to note that the issue is being very well attended by the government and the Navy. Congratulations to all officials, engineers, workers, and all other small and micro enterprises that have fructified this great occasion, a momentous occasion of celebration by all of us. It is only apt that this symbol of India's growing maritime power is being unveiled in Mumbai. The Honorable Chief Minister and the Deputy Chief Minister are here. There can be no befitting occasion than Mumbai for this great occasion. The docks with rich history, 250 years, will make anyone proud in the world. And the journey of 250 years has been negotiated, traversed by skill, hard work, dedication of the human resource, and the competent leadership that has resulted in this great day. Therefore, it is very apt, befitting, eminently suitable that this is taking place in Mumbai. The docks with rich history have shaped the social and economic trajectory of this dynamic city and of the nation. There is no city in the world as vibrant as Mumbai. Mumbaikars are never in complainant mode. They are always in a gear to perform. This is one such testimony. Friends, not many countries have the kind of history which we have. Our civilizational ethos date back to thousands of years. But when it comes to maritime past, oceanic influence has been there for 6,000 years. Since the time of Indus Valley civilization, we have been a seafaring nation. One of the earliest docks in the world at Lothal, in our country. Lothal, which connected the city to an ancient course of Sabarmati River on the trade route between Harpan cities in Sindh and peninsula of Saurashtra. Very old, that's the history. Today our nation stands at the cusp of remarkable growth. The naval chief focused that soon we are going to be the third largest global economy. In September 2022, we got this slot of being the fifth largest global economy. In the process, we overtook our colonial rulers. They ruled for 200 years. उनको पछाड़कर पांचवें पायदान पर आना हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है। और ये हमने तब हासिल किया जबकि कुछ दशकों पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। Credit goes to the government, the leadership, the vision, and every Indian who has contributed to this great growth. Friends, by all considerations, India will be the third largest global economy by turn of the decade. Now, when economy grows, when trade grows, what we are doing today bears great relevance. A growing economy means higher volume of trade. And look at what the Navy has to take care of. Over 90% of India's trade by volume and over 68% by value moves through maritime routes at present. This underlines the importance of Navy and what we are doing today. Friends, हर भारतीय आज बीट है,
हर भारतीय आज एक बात देख रहा है कि दुनिया में जो भारत का नाम है वो पराकाष्ठा पर है। भारत के पासपोर्ट की क्या कीमत है, भारतीय होने का क्या अभिमान है, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। In such a situation, our eyes are well set for Bharat at 2047, the centenary celebration of our independence. I have no doubt some of us may not be around, but youngsters will be around. Bharat will surely emerge as a global leader and stabilizing force. India's maritime strength is quintessential for our economic and strategic upsurge. It is heartening to note that the stealth frigates of Project 17 Alpha have 75% indigenous component. And this is because our visionary Prime Minister thought, make in India, आत्मनिर्भर बनिए, सबको साथ लेकर चलिए, सबका विश्वास हो. These are not empty slogans. These slogans have resulted in mega, big-ticket infrastructural projects in this country. What we have is at par with the best in the world today. It shows the steadfast dedication to foster and belief in our own skilled people, their technique, their contribution, their innovation. And this is taking place in defense sector as well. Multi-mission frigates of this series are capable of dealing with all kinds of threats to our maritime interests. And friends, the threats are multiplying. The role of India is increasing. The world is looking at us to secure these areas. It is gratifying to note Bharat has risen to the challenge. Indian Navy has risen to the challenge. Mazagaon shipbuilders has risen to the challenge. And that is why our country will ever be on the rise. The rise is unstoppable. The government of India has created an enabling policy architecture to promote domestic defense. Friends, go to Uttar Pradesh, go to Tamil Nadu. You will see the defense corridors. They are functional. They indicate the times that are to be seen by us. It is, friends, a matter of great pride that value of defense production in India has crossed the figure of 1 lakh crore for the first time in financial year 2022-23 on our home front. And this is bound to geometrically increase. I have no doubt about it. The government had launched the Innovations for Defense Excellence IDEX scheme to evolve startups, research institutions and academia in designing innovative solutions for our defense sector. This has resulted in big, impactful development. Over 300 startups have been engaged through IDEX, a big number. Each of them will be contributing qualitatively in a significant area. Indian Navy, and I congratulate Indian Navy, I congratulate leadership of Indian Navy that they have a directorate of indigenization with the motto, and every word in the motto carries a meaning, which they have realized on the ground. Ideate, innovate, indigenize. This is an impactful step in the right direction. This motto captures what Bharat is today. Friends, when there is increased capability, when there is growth, when the world looks up to you, when you become a real global power, the challenges are not far behind. The challenges pursue you. They call upon you to be ever prepared to sustain the place and enhance your position. India has emerged as a net security provider in Indo-Pacific region thanks to our capability of naval force, its infrastructure,
Today we are an important global player to secure and also to ensure a peaceful, rules-based maritime regime across the nations. When there is something on the ocean, it becomes very imperative, absolutely necessary to ensure there is rule-based maritime regime. This is under stress at the moment. This is under challenge at the moment. And therefore, what we are doing today is a step in the right direction to sustain, generate, and evolve that wholesome mechanism of rule-based maritime regime in the area. The security of Indian Ocean region and the larger Indo-Pacific has diverse challenging aspects. That, friends, is known to all who are connected with geopolitics of this region. This has attracted a lot of global attention also. It has an element of strategic aspect as also economy. Concerns like piracy, smuggling of narcotics, human trafficking, illegal migration, and natural disasters. All these are to the lot of Navy to perform. And the good part is, our Navy has vindicated in an exemplary fashion thanks to the commitment of the human resource involved therein. The discharge by Navy of the mandate to protect, preserve, and promote India's maritime interests could not have been more able. It is at highest peak. I congratulate our force. With full confidence, they will continue improving themselves for security of the world at large. Our Navy friends, like our country, like our civilization ethos, like our belief that world is one family, we stand for peace, harmony, global development. Our Navy has been vehicle of peace and goodwill during crisis. As Governor of State of West Bengal, I can tell you, I had the first-hand experience of seeing performance of our Navy and Coast Guard. There was not a single mortality on high seas when we had number of cyclones. Not a single one. And damage to property was absolutely limited. Under the overcharging vision of Sagar, which means security and growth for all in the region, India is cooperating with multiple partners to ensure economic growth and security in the region, while also tackling threats. Ladies and gentlemen, going beyond cutting-edge technology, the key asset that gives Indian Navy an edge over others is our rich human resource. Their courage, competence, and commitment make them the Navy's true force multiplier. Other things can be there, but if there is no spinal strength of human resource, things can't be that productive. We as a nation are lucky that our human resource is so dedicated, competent, and skilled, and quick to learn. We are proud of it. We all are proud of the laudable and significant role that women are playing in our defense forces. Few decades ago, when I was elected to Parliament in 1989, was a minister also for some time, this was unthinkable. I am a product of Sainik School, Chittorgarh. But it was beyond our contemplation that women will be playing that kind of significant role. Look at where we have come now. With a strong presence of over 10,000 women across Army, Navy, and Air Force, the Indian Armed Forces have made considerable strides in gender equality. As a matter of fact, we are an example to the world, to the developed world, with the kind of assignment this gender is handling. Notably, friends, women are now actively serving in combat roles in all branches, underlying their capabilities and commitment to serving the nation. The cementing
of women's position in the Indian Navy showcases a remarkable timeline. In 1992, more than 3 decades ago, it was in the shape of Short Service Commission. The distance we have traversed in 3 decades and more in recent years says it all. Integration of women into all branches, cadres, specialization of Navy and other defense forces is now getting increasing integration. Women are ably taking up roles on board warships. This is a qualitative change because we are having involvement of 50% of humanity. This is a turning point. The launch of the warship today carries a clear message that India will continue to invest in her maritime power. It was a proud moment for me in Rajya Sabha chairman when the Honorable Raksha Mantri was responding. When it comes to defense, we don't go by the percentage of budget spending. We go by what is needed shall be done. And that was a policy statement reflecting attitude of the government that our defense aspects are always a priority and shall never be compromised. This development, like many others that have taken place recently, will further the nation's strategic reach while ensuring safe and prosperous maritime order for all. Friends, I am sure, like all of you, very confident that Mahendragiri, once commissioned, will proudly fly the Tiranga across the oceans as an ambassador of India's maritime might. And when it comes to Tiranga, when it comes to Shiv Shakti Point, you know what we saw recently. We stamped these 2 very important aspects even on the moon, something the world has never seen. Once again, congratulations to MDL, Indian Navy, the designers, engineers, workers, micro, small enterprises, and everyone connected in the construction of this magnificent warship. Bharat is proud of everyone who has toiled hard to bring this ship into reality. May Mahendragiri prove जल में यशे बल में तशे, जिसका मतलब है जिसका समंदर पर कब्जा है वही सबसे बलवान है। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। हजारों साल पहले जहां भारत था, विश्व की पराकाष्ठा पर था, विश्व का इकोनॉमिक जाइंट था, ज्ञान का भंडार था, दुनिया हमारी तरफ देखती थी। अब बदलाव आ गया है। जो लोग हमको राय देते थे आज हमसे राय लेते हैं। वो दिन दूर नहीं है। We will be at number 1 and that will be the best that can happen to this planet because we stand for peace, prosperity, harmony, growth of all, and we treat the world as one family. Jai Hind. अब मैं आह्वान प्रस्तुत करने के लिए सुश्री वैशाली घरत और सुश्री तृप्ति सर्वदे को आवाज़ देता हूँ। अदितिरअद्यो अदितिरअन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिपञ्चजनाः अदितिर्जतम् अदितिर्जनित्वम् महीभूषु मातरं सुरतानाम् अमृतस्य पत्नीं वसे हवमहे तुविक्षत्रां जलन्तीमुरुचिं सुषमणिम् अदितिं सुप्रणितिं सत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुषमणिम् अदितिं सुप्रणितिं दैविलावं स्वरित्रां नागसो अस्रवन्ति मामरुहे मा स्वस्तये वाजस्य नु प्रसवे मातरं
महिम् अदितिं नाम वचसा करामहे यस्या उपस्य उर्वन्तरिक्षं सानः शर्म त्रिवर्यं नियञ्छात। युद्धपोत का जलावतरण से पहले इस पर माल्यार्पण और इसका नामकरण किया जाता है। इस विधि विधान को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर संपन्न किया जाता है। मैं एमडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव सिंघल से आग्रह करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं विशेष अतिथि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखर के संग लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक प्रस्थान करें। इस विधि विधान में शामिल होने के लिए मैं निवेदन करता हूं सम्माननीय राज्यपाल महोदय से, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, सम्माननीय कामगार मंत्री महोदय से, नौसेना अध्यक्ष महोदय से, युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक महोदय से, निदेशक जहाज निर्माण से कि कृपया लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पधारें। हमारे अन्य अतिथिगण कृपया मंच पर ही आसीन रहें। ठीक है सर। वेलकम सर। मैडम प्लीज कम। हाँ हाँ इकडेही म्हणता इकडे। हाथ जोड़ा। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिविस्तार्द सिद्धर्द पूजित सुरासुरे सर्व विघ्नहरस्तमये गणाधिपतये नमः। रिद्धि सिद्धि मंगल मूर्ति महागणपते नमो नमः। कुमकुम लगा ली, हाथ हल्दी कुमकुम लगा ली। आप कपाल को दो, आप अपने खुद को लगा लीजिए। शुद्ध होता मुझे जाने हे कुमकुम लगा। बस। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष्यरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। महागणपति जगदम्बा देवता प्रसन्नो वरदो भव। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो देवी महादेवी शिवाई सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राई नियता पदसतां जगदम्बा देवता प्रसन्नो वरदो भव। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति सिद्धिविनायक मंगलमूर्ति महागणपति हैद्रां समर्पयामि। महागणपते देवताय नमः। हैद्रां समर्पय वरुणदेवता हैद्रां समर्पयामि। कुंकुम समर्पयामि। हैद्रा कुंकुम सौभाग्य द्रव्याणि अर्पयामि। नमस्ते सिद्धिविनायक मंगलमूर्ति महागणपति देवताय नमः। अक्षतां समर्पयामि। सिद्धिविनायक मंगल
मंगलमूर्ती महागणपती देवताय चंदनम अर्पयामी नमस्कुर्मी सिद्धिविनायक मंगलमूर्ती महागणपती देवताय नमः मंत्रपुष्पाणीं समर्पयामी नाना परिमल फुलद्रव्याणि अर्पयामी नमस्कुर्मी सिद्धिविनायक मंगलमूर्ती देवताभ्यो नमः विविध पुष्पाणि फुलानि अर्पयामी नमस्कुर्मी ओम श्री वरुणदेवताय नमः वरुणदेवताय नमः तुलसीपत्राणि अर्पयामी नमः तुलसीपत्राणि अर्पयामी नमस्कुर्मी ओम हनुमन्तदेवताभ्यो नमः अक्षते हनुमन्तदेवताभ्यो नमः अक्षताम् अर्पयामी अक्षताम् अर्पयामि नमस्कुर्मी हनुमन्तदेवताभ्यो नमः फुल मंत्र विविध पुष्पाणि फलानि समर्पयामि नाना परिमलद्रव्याणि अर्पयामि नमस्कुर्मी ओम श्री ओम महागण सिद्धिविनायक मंगलमूर्ति महागणपते नमः धूपम अग्रपयामी धूपम समर्पयामी दीपम समर्पयामी दीपम समर्पयामी नाना परिमल द्रव्याणि अर्पयामी नमस्कुर्मी ओ धूपदीपम समर्पयामी नमस्कुर्मी हात मुझे ओम ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः वास्तुपुरुषाय नमः हरिद्राम ओम चैतन्य वास्तुपुरुषाय नमः हरिद्रा कुंकुम सौभाग्यद्रव्याणि अर्पयामि नमस्कुर्मी नौका जलयान देवताय नमः हरिद्रा कुंकुम सौभाग्यद्रव्याणि समर् जलयान देवताभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि जलयान देवताभ्यो नमः विविध पुष्प फुल दे विविध पुष्पाणि फुलानि अर्पयामि नमस्कुर्मी नाना अर्पयामि नमस्कुर्मी ओम जलना देवताभ्यो नमः नारिकेला फलानि मैडम ये हार आपके लिए है इसका आधार है ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः सुगंधि पुष्पमालांच सुगंधि पुष्पमालांच अर्पयामि नमस्कुर्मी विविध पुष्पाणि फुलानि अर्पयामि नमस्कुर्मी धूपदीपं नमस्कुर्मी बाद में करिए सर श्री गणेशाय नमः ओम श्री हल्दी कुंकु हरिद्राम समर्पयामि हरिद्राम ये बोट से या बटन है हरिद्राम समर्पयामि नमस्कुर्मी कुंकुम समर्पयामि नमस्कुर्मी हरिद्रा अक्षताम् अर्पयामि नमस्कुर्मी ओ वरुणदेवता जगदम्बा देवता वरुण महागणपति देवता चंदनं समर्पयामि नमस्कुर्मी नाना परिमलद्रव्याणि विविध पुष्पाणि फुलानि अर्पयामि नमस्कुर्मी ओम वरुणदेवता वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम वास्तु जलना देवताभ्यो हळद कुंकू ते पाणी करू हळद कुंकू जलना देवताभ्यो नमः हरिद्राम शिव की पूजा करते जलना देवताभ्यो नमः हरिद्राम समर्पयामि जलयान देवताभ्यो नमः हरिद्रा कुंकुम सौभाग्यं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि सर्व यंत्र मंत्र स्वरूपाय नमः वाहन देवता जलयान देवताय नमः नमस्कुर्मी ओम श्री वास्तुदेवताय नमः वास्तुदेवता विविध पुष्पाणि फुलानि अर्पयामि नमस्कुर्मी स्थापित धूपदीपं समर्पयामि ओम जलयान देवताभ्यो नमः नाना मंत्रपुष्पाणि अर्पयामि नमस्कुर्मी नाना प्रेमद्रव्याणि अर्पयामि नमस्कुर्मी प्रार्थनापूर्वक दंडवत नमस्करोमि टाइम है यार अच्छा चालेल आता मग आता मी काय करता ओम दे ओम सर सुगंध पुष्पमाला सर आइए पुष्पड़ाई हाँ सुगंध पुष्पमालांच अर्पयामि नमस्कुर्मी विविध पुष्पाणि फुलानि अर्पयामि नमस्कुर्मी नाना परिमलद्रव्याणि अर्पयामि नमस्कुर्मी हार गया नाना परिमलद्रव्याणि अर्पयामि नमस्कुर्मी विविध पुष्पाणि सुगंध पुष्पमालांच असा आता सुगंध पुष्पमाला अर्पयामि नमस्कुर जरा आपला असं हात लावला ती मी हात लावला नाही असं बघाशी ओम सुगंधी पुष्पमालांच दुनियात फोटो घ्यायचा अर्पयामि नमस्कुर्मी अरे मग फोटो हलवा आठवण आहे ना ओम श्री वास्तुदेवता वास्तुपुरुषाय नमः ओम श्री सोडून द्यायचं वास्तुदेवता जलना देवताभ्यो नमः सुगंध पुष्पमालांच अर्पयामि नमस्कुर्मी प्रार्थनापूर्वक दंडवत नमस्कुर्मी जलना देवताभ्यो धूपदीपं एक मिनिट फोटो जलना देवताभ्यो नमः धूपदीपं समर्प्य अर्पयामि नमस्कुर्मी ओम सर
हां 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 हार 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 ओम स जलदेवताभ्यो नमः सुगंध पुष्पमालांच्या अर्पयामी नमस्कृभी प्रात मंत्रपुष्पं समर्पयामी नाना परिमल द्रव्याणी अर्पयामी नमस्कार फोटो फोटो एक फोटो नमस्काराम समर्पयामी अर्पयामी नमस्करोमि आता सर आता ओम श्री वास्तुदेवता वास्तुपुरुषाय नमः चैतन्य वास्तुपुरुषाय नमः चैतन्य वास्तुदेवताय नमः सुगंध पुष्पमालांच अर्पयामी नमस्करोमि 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 ओम श्री गणे सर नारळ आता नारळ पुढे सर टाइम टाइम आहे टाइम टाइम आहे टाइम आहे नाही कोकोनट मॅडम आपके से फोटो एक मिनिट नारळ कुठे शंकर 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 हां हां नारळ नारळ फोडायचं आहे असं फोडा याच्यावर टाकून हां तोडण्याचं आहे थोडासा शंकर शंकर दर का शंकर हां हां थोडा हां ठेव इथे हे पंडिका मैं इस पद का हाँ एक मिनट मैं इस पद का नाम भारतीय नौसेना पद महेंद्रगिरी रखती हूँ। इस पद और इसके सभी नौसैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इंग्लिश वाटा आता इंग्लिश नो प्रॉब्लेम ठीक है श्री गणेशाय नमः प्रणम्य शिवसादैवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तावास स्वरे नित्य मायुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तद्वितीयं तुते कृष्णपिङ्गाक्ष गज वक्रचतुर्दकं लम्बोदरः पञ्चमं च षष्ठविकटमेव च सप्तमविघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टं नवं भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादश गणपतिं द्वादश तु गजाननं द्वादशे नामानि सन्न्यपठन्नरा न च विनोदसर्वसिद्धि विद्यातिलपतिभ्या धनातिलभेधनं अपनी नजरें टिकाए रखिए। मोक्षाधिपतिं जपेद गणपतिं स्तोत्रं षड्भिर्मासे फललभत संवेद सिद्धि लभते नात्र संशया एष्ट्योभ्यो च ब्राह्मणेभ्यो च लिखित्वा समर्पयेते तस्य विद्या भवेत् सर्वा। लोगों का उमंग और उल्लास साथ में आसमान पर है। मारे खुशी और आनंद के सभी झूम रहे हैं। गणपतिं स्तोत्रं संपूर्णस्तु श्रीजानना प्रणवस्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात् साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो देवी महादेवी शिवाई सततं नमः नमः प्रकृते भद्राई नियता प्रणता सुतं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्ते टाइम 24 का है 24 का 24 का है 24 हाँ हाँ अभी ये हाँ मालूम तो फिर मैं बोलूँ हाँ ठीक है हाँ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम त्रिगुणात्मकाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णु पत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात् ओम वायुपुत्राय विद्महे अंजनी सुताय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् ओम शून्य शून्याय विद्महे परम शून्याय धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे मधुदिगराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् ओम षण्मुखाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षष्ठ प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् जगदम्बा देवता एकं मंत्रपुष्पं समर्पयामि मानस पूजन फूल मानस पूजा अर्पयामि नमस्कुरुमि फिर फूल चढ़ा दो ना हाँ भाजप चुका है, महेंद्रगिरी का जलावतरण हो रहा है। कृपया राष्ट्रगान के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं और जो डिफेंस पर्सनल यूनिफॉर्म में हैं उनसे आग्रह है कि वे सैल्यूट करें। Master in Indian Army, he is a army aviator. Indian Army, he is an NDA. He is a Leh Ladakh. सर फोटो नहीं कर रहे फोटो तो एक लास्ट अनाउंसमेंट करना पड़ेगा जब वीआईपी जाने के बाद ही सब लोग अतिथि सर वरती फोटो काढा सर इधर फोटो काढा ना गेले शिप गेला पूजा का फोटो काढ फोटो का गेले का ते जाऊ द्या ठीक आहे जाऊ द्या ओके सर आगे या सर या नहीं यार आपको सर का इम्पोर्टेंट है सर तुम्ही या सर आमची मेमरी फक्त साहेब बहुत अच्छा पूजा करा दिए। ओके थैंक यू ओके सर थैंक यू मैडम अरे हाँ मेरा सन इंडिया एक्स इंडिया भी ही इज ए मेजर नाउ he is a first now Leh Ladakh he is a aviator। विशिष्ट अतिथियों के जाने से पहले तक कृपया यथास्थान बने रहें। इस समारोह में उपस्थित हुए मैं सभी आमंत्रित अतिथियों से निवेदन करता हूं, कुछ एक कार्यक्रम अभी शेष है,
अब मैं एमडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव सिंघल से आग्रह करूंगा कि विशिष्ट अतिथियों का स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सबसे पहले सम्माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। आज के समारोह की विशेष अतिथि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ को एक स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। माननीय राज्यपाल महोदय को एक स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। माननीय राज्यपाल महोदय को एक और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री को एक और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री को एक स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री को एक और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय कामगार मंत्री को एक स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय कामगार मंत्री को एक और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय नौसेना अध्यक्ष महोदय को एक स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्माननीय नौसेना अध्यक्ष महोदय को एक और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, फ्लैग ऑफिसर कमान इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान को एक स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। वाइस एडमिरल किरण देशमुख, नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण को एक स्मृति चिन्ह देकर वाइस एडमिरल किरण देशमुख, नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
अब मैं निदेशक जहाज निर्माण श्री विजू जॉर्ज और निदेशक संवाई योजना एवं कार्मिक कमांडर वासुदेव पुराणिक से निवेदन करूंगा कि सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखर, सम्माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, सम्माननीय कामगार मंत्री श्री सुरेश खाड़े, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमान इन चीफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ अगले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करें और बाकी सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया मंच पर ही आसीन रहें। जलावतरण के इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए एमडीएल के कुछ अधिकारियों और कामगार को नौसेना अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं श्री जय वर्गीस,
जहाज प्रबंधक यार्ड 654 श्री स्वप्निल पाटिल, मुख्य प्रबंधक अभियांत्रिकी श्री GS राजेश कुमार, प्रबंधक लॉन्चिंग प्रभारी श्री रघुनाथ महादेव कुम्हार, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर। अब मैं नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार महोदय से निवेदन करते हैं कि उत्कृष्ट कार्यों के लिए कृपया इन अधिकारियों और कामगार को सम्मानित करें। अब नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और मजगान डॉक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव सिंघल प्रेस वार्ता करेंगे।
And because of occasion that the ship also now launched and commissioning. This is the 17 Alpha project ship, which has been the follow-on of the Shri class, and we are very happy with the Shri class ships are serving us well, and therefore we have gone for the follow-on of ship that's been 17 Alpha. We have built frigates, we got speed, we got endurance, selected weapon capability, all anti-air, anti-surface, anti-submarine, very good sensors. 75% of the ship is indigenous, which is a major achievement. And in launching this ship has been launched in the shortest possible time ever, in about 14 months. So this is again an achievement. This has all been done because of the change in the type of construction that we do called the integrated construction, where the ship is built in sections and it is outfitted and then it is joined together. So this helps to, so then therefore you can work in different places. You are aware that once the ship is completely built and then it is in the water, going on board and fitting each time. This is a big thing which is, I'm not saying it is unique to India, it is other parts of the world as well. We have adopted this to the best of the time. We are hopeful that future also so that there is efficiency in terms of setting on assets as well as So we already have two aircraft carriers. The update on the third, I'm pretty sure you must be getting questions on the same. Yeah, we are working on third aircraft carrier, which will be a repeat of the Ghan. Primarily, there is a lot of inquiry that is generated in terms of building of an aircraft carrier. The shipyard is got the expertise now, and we are aircraft carrier. Awards, very good place for it. You are aware that aircraft carrier construction does not have a short time with the time the case get the sanctions and then it will take time for the it is still with us. Because it's a complicated make a government case, we make a general case, then we have to get the budget, आत्मनिर्भर भारत की बात इसके नजरिए पहले आप स्टील बाहर से इम्पोर्ट करते थे, वो इसमें जितने इक्विपमेंट्स हैं, इम्पोर्ट सिस्टम है, सब होती है सर कैमरा लोग LNT, महिंद्रा डिफेंस, कम से कम 2 साल से ऊपर कोशिश है कि अपने नेशनल लीडरशिप को ये दिया है कि 2047 तक भारतीय नौसेना एकदम भी हमारा कॉन्टनिंग है इंजन और कुछ एकदम क्लियर लाउड एंड क्लियर बनेगा। उसका अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, 4-5 साल में हो जाएगा। आवाज है क्या? आया ना दूंगा
स्टेज ये खराब है, थोड़ा सा रास्ता अपना थोड़ा सा हार्ड है। ये कहते हैं 3 प्लग वाला ना, पूरा 3 प्लग नहीं, 2 प्लग वाला चाहिए। बड़ा सांगू आहे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है अब जैसे हमारे पार्टी थर्ड लार्जेस्ट बने या बने तो हमारा हमारे देश में उधर से ही जाएगा। हमारा